with this class of GFR, factors determining GFR, how it is measured. Okay, one of the important question which covers or which was taken in blood, okay, that was Starling forces or Starling hypothesis. What does that mean, Starling forces or Starling hypothesis? Okay, so the same forces, they are acting at the glomerular level and they are responsible for glomerular filtration rate. In the previous class, it was seen net filtration pressure came out to be 10 millimeters of mercury, and that is the difference between the hydrostatic pressure and the colloidal osmotic pressure. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन कौन सा था, जो कि कैपिलरीज के अंदर था, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और डिफरेंस ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रेजेंट इन द बोमेन स्पेस और द फिल्ट्रेट, okay, minus the colloidal osmotic pressure of the glomerular capillaries minus the colloidal osmotic pressure of the filtrate. Value of the colloidal osmotic pressure of the filtrate was 0, and final formula which came out to be C. Hydrostatic pressure 60, colloidal osmotic pressure 32, hydrostatic pressure of the Bowman's capsule is 18, and finally it came out to be 10. Effective filtration pressure is difference of the hydrostatic pressure of the two, that is the glomerular capillaries and the Bowman's space, minus the colloidal osmotic pressure of the glomerular capillaries and the colloidal osmotic pressure of the Bowman's space. This value is 0. So whenever there will be change in either of these pressure, it will result into change in the glomerular filtration rate, and the final formula is coefficient, filtration coefficient into effective filtration pressure. Came out to be finally 125 ml per minute. Now the next question comes. Question इतना लेंथी आता है कि define GFR, give its normal value, okay, add a note on factors affecting GFR, okay, and write down the method of measurement of GFR. ठीक है, 4 component हो गए, और अगर बहुत ही अच्छा लग रहा आपका, so that it can be broken down into short note. So 4 components should be clear. That is the first step of urine formation, that is filtration or ultrafiltration. Now when we are talking of this and any of the Starling forces, filtration coefficient depend किस पे कर रहा है, permeability पे कर रहा है और surface area पे कर रहा है. Normally they are in the ideal situation. When they are in the ideal situation, the value comes out to be 12.5. permeability या thickness किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, endothelium of the capillaries, basement membrane and visceral layer of the Bowman's capsule. If due to some condition there is increase in the permeability, क्या scenario हो सकता है, permeability कैसे बढ़ सकती है? permeability किससे बन रही है? endothelium lining of the capillary, basement membrane, ठीक है, और visceral layer of the Bowman's capsule. First and foremost chances that there might be congenital defect in the thickening or the filtrating membrane. Second there might be change in the collagen or the nephrin. Nephrin क्या है? Basement membrane है, एक proteinaceous layer है, ठीक है. तीसरा, there might be a change in the endothelium fenestration of the capillary. So any of the reasons, ठीक है, filtrating membrane 3 चीजों की बनी हुई है, तीनों में से किसी भी चीज के अंदर चेंज आ रहा है, that might increase or decrease the permeability of the membrane. If the permeability increases, what will happen? GFR will definitely increase. If the permeability decreases, GFR will decrease. In certain cases, what happens is some of the blood cells or some of the proteins okay,
some of the proteins having the bigger size, 8 नैनोमीटर से बड़ा कोई पार्टिकल है, एनायन है, प्रोटीन है, that might get travel from the endothelium of the capillaries to the basement membrane, but near the basement membrane we have the mesangial cells. ठीक है, मोहित भास्कर नहीं है? क्या फंक्शन होता है mesangial cells का मोहित? Just remember, one of the most important function of the mesangial cell is it helps in phagocytosis. So in any situation, if the bigger particle comes and gets settled on the basement membrane, they are phagocytized by which cells? Mesangial cells. Clear? So whenever there will be change in the permeability, it is going to affect the filtration coefficient, which is directly going to affect the glomerular filtration rate. If the permeability increases, GFR definitely increases. If decreases, GFR decreases. Near the glomerular capillaries, we have the mesangial cells. Okay, these mesangial cells, they are responsible for either the increase in the surface area or decrease in the surface area of the glomerular capillaries. So when they are stimulated, then what happens? There will be contraction in the glomerular capillaries. तो surface area कम हो रहा है तो GFR कम होगा. If there is dilation, surface area will increase, GFR will increase. But इस PPT में there is a reverse arrow. अगर किसी ने देखा हो और ऑब्जर्व किया हो तो ठीक है. तो mesangial cells के अंदर क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर है और एक्सपेंशन नेचर है. कॉन्ट्रैक्टाइल होगा तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का सरफेस एरिया कम होगा तो जीएफआर कम होगा. एक्सपेंशन होगा, डायलेशन होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जीएफआर विल इंक्रीज. तो जीएफआर के फॉर्मूला क्या है? फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट इनटू नेट इफेक्टिव प्रेशर. नेट इफेक्टिव प्रेशर अपन ने कैसे कैलकुलेट किया? स्टार्लिंग हाइपोथेसिस से. और स्टार्लिंग हाइपोथेसिस किन प्रेशर्स की बात कर रहा है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. इनकी वैल्यूज अपन ने प्लेस करी, फॉर्मूला अप्लाई किया, देन फाइनली वी गॉट इज 10 millimeters of mercury. So what may be the factors that determine GFR? One of the factors is filtration coefficient. That depends on what two factors? That depends on the surface area and permeability. Now another factor which determines GFR is systemic arterial pressure. In some books it is written as mean arterial pressure. When we are talking of the mean arterial pressure, the formula for mean arterial pressure is diastolic pressure plus 1/3 of the pulse pressure. There the value of the pressure written is 90 to 200 millimeters of mercury. अगर 90 से 200 millimeters of mercury है तो प्लीज उसको रीड करना. Which pressure they are talking about? They might be talking about the mean arterial pressure. In some books it's written systemic arterial pressure. When it is written systemic arterial pressure, we are talking of the systolic pressure, and the range is 80 to 180 millimeters of mercury. क्या हुआ? फर्स्ट क्लास में नींद? अगर नींद आ रही है, हेडेक हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, बाहर चल जाइए. You are not obliging anybody, okay? You are obliging yourself. So in books you might get two values. The two values कौन कौन से हो सकती हैं? एक तो systemic arterial pressure. When we are talking of systemic arterial pressure, the value will be 80 to 180 millimeters of mercury, and we are talking of the
systolic pressure. In some books, it is written as mean arterial pressure. Mean arterial pressure is the average pressure which takes place in a single cardiac cycle. Formula for the mean arterial pressure is diastolic pressure plus 1/3 of the pulse pressure. So the value of the mean arterial pressure is 90 to 220 millimeters of mercury. इन दोनों कंडीशन के अंदर GFR की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है। बॉडी की फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर वेरी करता है, ये आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने कर लिया। इट डिपेंड्स ऑन पोस्चर, ओके, इट डिपेंड्स ऑन एक्सरसाइज। So normal physiological activity, the blood pressure changes, okay, but during this range, either of the systolic blood pressure, that is 80 to 180 millimeters of mercury, or the mean arterial pressure, that is 90 to 220 millimeters of mercury, the body automatically auto-regulate the rate of glomerular filtration, that is known as auto-regulation. Clear? Now that auto-regulatory mechanism अपन बाद में पढ़ेंगे, but इस वेरिएशन या इस रेंज के बीच के प्रेशर को बॉडी ऑटो रेगुलेट करती है और GFR कांस्टेंट रखती है। But in any circumstances, if there is change in the hydrostatic pressure of the glomerular capillaries, hydrostatic pressure in the Bowman's capsule, colloidal osmotic pressure in the glomerular capillaries, and colloidal osmotic pressure in the Bowman's field. चार फोर्सेस हैं स्टार्लिंग फोर्सेस के जो कि फिल्ट्रेशन को पॉसिबल कर रहे हैं। इफ देयर इज वेरिएशन इन एनी ऑफ दीज, इट विल डेफिनेटली इफेक्ट द GFR, बट वेरिएशन बियॉन्ड व्हाट प्रेशर, बियॉन्ड 80 to 180 millimeters of mercury in case of systemic systolic blood pressure, or 90 to 220 in case of mean arterial blood pressure, ठीक है। अब ये जो प्रेशर है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द डायमीटर ऑफ द एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरी। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन गवर्न द lumen constriction and dilation of the efferent and the efferent artery? So it can be hormonal, it can be neuronal, it can be hormonal, it can be neuronal. Kidneys, what they are getting? They are exclusively getting sympathetic nervous supply. And what are the hormones which are responsible for constriction and dilation? We will see in further slides, but that results in the change in the diameter of the efferent and the efferent arterioles. If there is change in the efferent, you can see clearly, ठीक है, efferent का अगर diameter ज़्यादा हो गया तो क्या हो रहा है? There is decrease in the colloidal osmotic pressure of the glomerular capillary. वो कम होगा तो automatically GFR कम होगा, renal blood flow कम होगा. If there is increase in the diameter, more of the blood is coming into the Bowman's capsule and more of the filtration is taking place. Okay. अब क्या होता है, कई बार you are seeing your same batchmates, कोई नए तो स्टूडेंट एंटर नहीं हुए? Is there any need to whisper? So you have to apply this. If there is decrease in the colloidal osmotic pressure, what will happen? इसको आपको elaborate करके explain करता है. There will be decrease in the glomerular filtration rate. Increase in the colloidal osmotic pressure क्या होगा? अगर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो वाटर को अपने साथ में खींचेगा, तो क्या होगा? डिक्रीज फिल्ट्रेशन होगा। कोलाइडल नेचर क्या होगा? वाटर को प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा। तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी डिक्रीज इन द फिल्ट्रेशन। व्हाट आर द चांसेस व्हेन द कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर में इंक्रीज? That condition is known as hyperproteinemia. Okay, when there is hyperproteinemia, it results into decrease. और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? हाइपरप्रोटीनीमिया नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर इफरेंट आर्टीरियोल है उसका कंस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है,
इनिशियली तो जीएफआर इंक्रीज होगा, बट विद अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है तो जीएफआर इंक्रीज होगा, पर अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए है तो ब्लड जो है वो स्लगिश फ्लो हो जाएगा. इट विल नॉट बी एबल टू मूव फ्रॉम द इफरेंट आर्टीरियल इनटू द ईदर पेरिट्यूबुलर और वाजा रेक्टम. So it has to be there at particular time for longer duration. तो वो मूव नहीं कर पा रहा है, तो उसका इनपुट तो आता जा रहा है, आउटपुट नहीं हो रहा है, तो प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ रही है. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर विल बी डिक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. So two conditions which is responsible for increase in the colloidal osmotic pressure, one is hyperproteinemia, second क्या हो सकता है, constriction of the efferent arteriole, but condition क्या है, for longer duration. If it is for shorter duration, first thing will be it will increase in the GFR, but it is for longer duration it is going to decrease. The reason or the explanation is because it is going to increase the colloidal osmotic pressure which resists filtration. है ना, वो resist करेगा filtration को. So these are the factors which is responsible for. Now GFR filtration estimation, ठीक है, और renal blood flow estimation, they are the two gold standard tests for estimation or for assessing renal function test. For estimating glomerular filtration rate or renal blood flow, you need to have an idea regarding clearance or renal clearance. So you get a short note on renal clearance. Okay, so it is an imaginary thing. We cannot say exactly in what amount or what time the clearance takes place. बट क्लियरेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर अपन ये देखते हैं कि पर यूनिट टाइम में कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्लाज्मा में से एक्सक्रीट हो चुका है या हो रहा है. हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. ब्लड इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग. वी कैन नॉट से दैट दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ ब्लड इज एलिमिनेटेड बाय दिस कंसंट्रेटेड सब्सटेंस. ओके, it is continuously flowing, but just for explanation we are placing it as hypothetical that the clearance of a substance is the volume of plasma from which the substance was completely cleared by the kidneys per unit time, and the formula is C is equal to U V upon P. X is the concentration of the substance. When we have to estimate GFR, what are the two substances to be used is inulin and creatinine, because they fall under that particular criteria, that is the substance is freely filtered, neither reabsorbed, neither secreted. In case of creatinine, some percentage of creatinine is secreted from the proximal convoluted tubule, so that might change a slight variation of GFR. But what is the problem with the inulin? It has to be infused, it has to be injected, whereas in case of creatinine it is an in vivo mechanism. Nothing has to be infused, and we can get the clear formula or calculation of GFR. Okay, so that is the example of inulin, the amount present and the renal plasma flow which is taking place. Concentration of inulin in the plasma into renal plasma flow, no reabsorption, no secretion, filtered, totally excreted. This is inulin and this is creatinine clearance. Same concept is there, but the difference is only the clearance of creatinine thus exceeds the true GFR by 5 to 10%. How autoregulation takes place? What is autoregulation? %20% of the cardiac output is coming to the kidney. Okay, if there is increase or decrease in the pressure, okay,
तो एक पर्टिकुलर रेंज तक तो किडनी ऑटो रेगुलेट करती है। अब वो ऑटो रेगुलेटरी रेंज कितनी है? 80 टू 180 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और 90 टू 220 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ऑफ द मीन आर्टीरियल प्रेशर। तो इसके लिए दो थ्योरीज दी गई हैं कि किडनी ये ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म कैसे करती है। एक थ्योरी है मायोजेनिक मैकेनिज्म, ठीक है। सेकेंड है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलो फीडबैक मैकेनिज्म। फर्स्ट थ्योरी इज myogenic, second is tubulo glomerular feedback mechanism. When we are talking of the myogenic mechanism, okay, try to understand the afferent arterioles or the juxtaglomerular cells of the afferent arterioles. They are acting as baroreceptors. They are acting as baroreceptors. Macular denser cells of the DCT, they are acting as the chemoreceptors. Whenever there will be increase in the arterial pressure, there will be stretching of the efferent arterioles. जब भी pressure बढ़ेगा, there will be stretching. When there is stretching, and especially in what particular area of the efferent arteriole? Tunica media, okay. When there is stretching, there will be entry of the calcium ions to these muscle cells which are lining the arteriole. When the calcium cells enter into the particular cells, they will be resulting into contraction property. So automatically there will be contraction of the afferent arteriole. When there will be contraction, it will result into the increase in resistance. ठीक है, अगर इस रेंज से ऊपर, ठीक है, सपोज 140 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर हुआ, ठीक है, इस प्रेशर के साथ में रीनल सर्कुलेशन में आ रहा है और एफरेंट आर्टीरियोल पे इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो क्या होगा? एफरेंट आर्टीरियोल स्ट्रेच होंगी। स्ट्रेच होते ही क्या होंगी? इसके अंदर कैल्शियम आयन का मूवमेंट होगा। कैल्शियम आयन का मूवमेंट होता है तो एटीपी ब्रेक डाउन होता है, एडीपी बनेगा, ठीक है। और जो एडिनोसिन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए। बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और उसको समझने के लिए सिंपली क्या होता है, जैसे स्ट्रेचिंग होगी, देयर विल बी रिलीज ऑफ द calcium ion. These calcium ion will result into the contractile nature of the afferent arterioles. So adenosine is responsible for the contractile property of the afferent arteriole, and automatically the pressure is controlled or get back to the normal values. ठीक है, ये तो क्या पिक्चर हो गई अपनी? When the pressure is increased. The story is of myogenic mechanism. Myo means muscle. क्लियर? किसके कारण हो रहा है ये? एडिनोसिन के कारण हो रहा है। एडिनोसिन, और इससे एडिनोसिन से क्या हो रहा है? कैल्शियम का रिलीज हो रहा है, जिसके कारण पूरी पिक्चर हो रही है। एंड देयर इज चेंज एंड सेटिंग अप ऑफ द ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म. So what main important structure is involved in auto regulatory mechanism? It is juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus रेनिन के अलावा क्या कर रहा है? रेनिन भी फाइनली किसको करेक्ट कर रहा है? ब्लड प्रेशर को, है ना। तो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका आ गया? juxtaglomerular apparatus का। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा इन्वॉल्व है? तीनों इंपॉर्टेंट है। मेसेंजियल सेल्स अपनी प्रॉपर्टी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की और फैगोसाइटोसिस की, ठीक है। और एफरेंट आर्टीरियोल का जो जस्टाग्लोमेरुलर रीजन है वो क्या कर रहा है? सेंसिटाइज कर रहा है हाई प्रेशर को। और किस तरह एक्ट कर रहा है? इट इज एक्टिंग एज अ baroreceptor, that is it is reading the change in the pressure and accordingly it is correcting the circulation or the renal circulation, and that is known as auto regulatory mechanism. ठीक है, रीनल सर्कुलेशन मिनिमम इतनी होनी चाहिए, उसके अंदर इतना मिनिमम प्रेशर होना चाहिए, और बॉडी इसको ऑटो रेगुलेट कर रही है। उसमें से एक थ्योरी दी है वो है मायोजेनिक मैकेनिज्म। Tubuloglomerular feedback mechanism. If there is decrease in the
arterial blood pressure, there will be decrease in the delivery of sodium chloride to the macula densa cells. कम प्रेशर के साथ आ रहा है, कम ब्लड आ रहा है, कम फिल्ट्रेशन हो रहा है, कम फिल्ट्रेशन हो रहा है तो कम सोडियम जो है वो डीसीटी तक पहुंच रहा है. जैसे ही कम सोडियम क्लोराइड डीसीटी तक पहुंचेगा, मैक्युलर डेंसा विल सेंसिटाइज दैट देयर इज decrease in the concentration of sodium ion reaching to the DCP. It is acting as a chemoreceptor. Now what it will do? Decrease in the resistance of the afferent arteriole, that is vasodilation. इसको क्या करना पड़ेगा? अगर increase करवाना है सोडियम क्लोराइड का, it has to increase the blood circulation coming to the afferent arteriole. और उसका सबसे easy method क्या है? Vasodilation. So vasodilation of the afferent arteriole is done. Increase in glomerular hydrostatic pressure to normal the level. An increase in renin release from this cell, which will form angiotensin 2, constrict the efferent arteriole. Okay, glomerular hydrostatic pressure automatically will increase. That will result into increase in the GFR. एंजियोटेंसिन 2 का मेन फंक्शन क्या होता है? वेसोकंस्ट्रिक्शन तो कर रहा है, वो कहाँ का? अभी अपने मायोजेनिक मैकेनिज्म देखा था. मायोजेनिक मैकेनिज्म में क्या हो रहा था? एफरेंट आर्टीरियोल का हो रहा था, है ना? एफरेंट आर्टीरियोल का कैल्शियम की वजह से हो रहा था, ठीक है. और उसमें भी मेनली अपन ने एडिनोसिन, ठीक है, एटीपी हो रहा था, एडिनोसिन को रोल में लिया था. यहाँ पे अपन बोल रहे हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, पर वेजो कंस्ट्रिक्शन एफरेंट आर्टीरियोल का कर रहा है एंजियोटेंसिन 2, ठीक है. हम वेजो कंस्ट्रिक्शन तो बोल रहे हैं, बट मेनली वी आर कंसर्न विद एफरेंट एंड एफरेंट आर्टीरियोल. So which mechanism is triggering or responsible for which particular function? So when we are talking of angiotensin 2, it is mainly responsible for vasoconstriction, but vasoconstriction of the efferent artery. ठीक है. बाकी रेनिन के बहुत सारे फंक्शन है. रेनिन फिर एल्डोस्टेरोन को, तो इसके जो फंक्शंस है वो डिवाइड हो जाते हैं केमिकल सेंट्रल फंक्शंस एंड पेरिफेरल फंक्शंस. ठीक है. रेनिन रिलीज भी होगा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट भी होगा. तो सेंट्रल मीन्स इट इज गोइंग टू इफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा. हाइपोथैलेमस किस सेंटर को? थर्स्ट को. थर्स्ट करेगा इंक्रीज इन द वाटर इनटेक और फ्लूइड इनटेक. तो जो एंजियोटेंसिन 2 है या रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है, ये दो तरह से एक्ट करते हैं, सेंट्रल लेयर पे और पेरिफेरल लेयर. ठीक है. पर जब अपन एंजियोटेंसिन 2 की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रिक्शन एफरेंट आर्टीरियोल का हो. ठीक है. वेजो कंस्ट्रिक्शन, बट स्पेसिफिकली इट इज ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल. ओके. क्लास के बाद में कोई नहीं आएगा कि मेरी अटेंडेंस रह गई थी और मेरा सिर दुख रहा था और मैं कुछ और कर रहा था या कर रही थी. देखो, ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? ट्यूब्यूल वर्ड क्या आया? ट्यूब्यूल ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म. ये कब एक्टिवेट हो रहा है? व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द सिस्टमिक ब्लड प्रेशर. व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज फाइनली गोइंग टू द DCT. ठीक है. व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एट DCT और मैक्युलर डेंसा, इट इज डेफिनेटली सेंसिटाइज्ड. जैसे ही ये सेंसिटाइज करेगा, इसका क्या होगा? रेनिन को रिलीज करेगा. प्लस जो मेसेंजर सेल्स है ना, वो भी अपनी इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे. ठीक है. मेसेंजर सेल्स अपनी इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे एफरेंट आर्टीरियोल को. प्लस इट इज गोइंग टू फॉर्म द एंजियोटेंसिन 2. एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? एफरेंट को कंस्ट्रिक्ट करेगा और एफरेंट का डायलेशन बढ़ाएगा. एफरेंट का डायमीटर कौन बढ़ा रहा है? मेसेंजियल सेल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और देयर विल बी इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द एफरेंट आर्टीरियोल. व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल, मोर ऑफ द ब्लड इज गोइंग टू कम. पर एंजियोटेंसिन के
साइमल्टेनियसली फंक्शन चल रहे हैं, उसमें से एक फंक्शन और भी इम्पोर्टेंट है कि वो हाइपोथैलेमस को थर्स्ट बढ़ाएगा, दूसरा एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करेगा। एल्डोस्टेरॉन का भी क्या फंक्शन है, सोडियम को रीएब्जॉर्ब करेगा, जहां सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा ऑटोमेटिकली वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। तो ये एक फीडबैक दे रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी को कि अपन किस तरह से इसका करेक्शन करें। तो टिब्यूल, DCT इज अ टिब्यूल, ओके, टिब्यूलो ग्लोमेरुलो feedback mechanism. So two theories, myogenic and tubulo-glomerular feedback mechanism. One is responsible for increase in the diameter of the afferent arterioles. Second one is responsible for decrease in the diameter of the efferent arteriole. पर दोनों का combined action क्या है? Increase in the arterial pressure that will definitely increase the hydrostatic pressure, और hydrostatic pressure increase होगा तो GFR automatically increase. तो ये दो मैकेनिज्म की हेल्प से किडनी ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म कंट्रोल करती है। और ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है कि इतना वेरिएशन होने के बाद भी GFR की वैल्यू कांस्टेंट रहती है इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हेल्दी कंडीशन। ओके, दिस इज द मायोजेनिक मैकेनिज्म, इंट्रिंसिक कैपेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स टू कंस्ट्रिक्ट व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज। Constriction prevents excess increase in renal blood flow and GFR when blood pressure rises. When blood pressure decreases, the myogenic mechanism reduces the vascular resistance and vessels dilate. This is the hormonal control of GFR. अगर आपके पास टाइम नहीं है कभी आंसर लिखने का तो प्लीज गो फॉर फ्लो चार्ट, और टाइम है तो दोनों चीजें सब्जेक्टिव एज वेल एज diagrammatic or flow chart representation that is going to clear the concept. Okay, so drop in blood pressure, renin angiotensin mechanism, angiotensin 2 hypothalamus को भी करेगा, cardiovascular system को भी करेगा, और adrenal cortex को भी कर रहा है। Adrenal cortex is responsible for aldosterone. Aldosterone is salt and water retention. Cardiovascular system, vasoconstriction. Okay, it will elevate the blood pressure. Hypothalamus, thirst and drink. इसके अंदर कहीं कोई ऐसा नहीं है जिसमें आपको पता ना चले कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में जो आप लोगों ने प्रेजेंट किया था, ठीक है, 50% स्टूडेंट्स दे wrote it correct, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट, आपका थ्योरी नॉलेज सही था, बट द वे यू प्रेजेंटेड योर आंसर्स वर रॉन्ग। ठीक, तो ये एक गलती थी जिससे कि सीखे आप कि आपको किस तरह से फिजियोलॉजी में यू नीड नॉट टू राइट इन सब्जेक्टिव डिटेल। ठीक है, अगर आपने फ्लो चार्ट, डायग्रामेटिक, डिफरेंशिएट, टेबुलेट, ठीक है, ये कर दिया ना, तो साथ में आप सब्जेक्टिव बहुत अच्छा लिख सकते। तो एग्जामिनर के पास इतना क्लियर मैसेज आता है कि द पर्सन कॉन्सेप्ट आर क्लियर। ओके, दिस इज इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2 causes constriction of efferent arteriole, increases glomerular blood pressure and filtration, and finally urine volume is less but concentration is high. What is the another name for ADH? Vasopressin क्या करेगा? This is sympathetic control of GFR, that is extrinsic. When the sympathetic nervous system is at rest, they are maximally dilated and auto-regulatory mechanism prevails. But when it is under stress, they are getting released, efferent arteriole constrict, filtration is inhibited. During fight or flight, blood is shunted away from the kidneys. When it gets renin-angiotensin mechanism, तो ये सारे factors हैं जो कि इन सबको regulate कर रहे हैं। So this is about the first step of urine formation, that is glomerular filtration. और इसको अपन ने कैसे स्टडी किया? The rate, last row, आगे आ जाओ तीनों, खड़े हो जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ तीनों, आगे आ जाओ। कुछ कॉपी पेन भी लाए हो क्या? बैठो।
कुछ भी नहीं रहा है, कॉपी पेन खोलने की भी वो नहीं करी। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजियोलॉजी, जनरल फिजियोलॉजी, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यस और नो, है ना? तो क्या होता है डिफ्यूजन? नहीं, डिफ्यूजन किस तरह से एक्सप्लेन करोगे? हाउ विल यू डिफाइन इट? हाई टू लो कंसंट्रेशन, किसका मूवमेंट होगा? सॉल्यूट का होगा, सॉल्वेंट का होगा? सॉल्यूट का होगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? Conducted with the help of protein. So first step is the mechanism of urine formation, filtration, ठीक है। अब filtration के ऊपर लेंथी क्वेश्चन आ सकता है, वो मैंने आपको बता दिया किस किस फॉर्म में आ सकता है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप विच इज इम्पॉर्टेंट इज reabsorption. Second important step is reabsorption. Why we are calling it reabsorption? The content is coming itself from the blood, it is getting filtered, it is getting entered as filtrate in the Bowman space, and again it is getting entered into the blood. Okay, whatever the substance, they are getting reabsorbed. They are not placed in the interstitial spaces, they are placed or they move through the interstitial space into either the peritubular capillaries or either into the vasa recta. So re means again, so they again reach to their original site, that is blood. So that is reabsorption. Yes. Now when we are to study reabsorption, we need to just recall the different transport mechanisms which are occurring, which we have studied in our first chapter of transport across cell membrane. In the first lecture, I have shown you what are the substances mainly which are getting filtered, okay, and the content which this particular substance की urine में होती है, जैसे ग्लूकोज है वो 0, ठीक है, प्रोटीन्स 0, ओके। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं जिनका कि टोटल रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो वो भी नेफ्रॉन के हर सेगमेंट में अलग अलग होता है। Nephron का proximal convoluted tubule is mainly responsible for maximum reabsorption. When we are saying that the PCT is responsible for 65% of the reabsorption process which takes place, histological changes are seen in the PCT cells. So histological changes which are seen in the PCT are, there is increase in the number of mitochondria in the PCT, plus there is increase in the surface area or the folds which are present in the apical area, plus the folding increases in the basolateral side also. ठीक है, एक हो गया एपिकल जो कि ल्यूमन की तरफ फेस कर रहा है, एक हो गया बेसोलेटरल, दोनों तरफ की फोल्डिंग्स बढ़ जाएगी. Towards the apical there will be finger like projections which are going to increase the surface area so that maximum reabsorption process can be done, and basolateral foldings, they are responsible for reabsorption back to the blood. So they have to move the substance from the lumen into the lining of the tubule, from the lining of the tubule into the interstitial space, and from the interstitial space back into the capillary. What is the osmolarity of blood? कितनी होती ब्लड की ऑस्मोलरिटी? It is 280 milliosmoles per liter, or in some books it might be 300 milliosmoles per liter. Sit down. Okay. Now when the nephrons which are placed in the cortex, they are cortical nephrons, they are responsible for urine formation. So the blood which is entering into the cortical nephrons via afferent arterioles, the blood osmolarity remains same, that it is 300 milliosmoles per liter.
So the same osmolarity is maintained in the proximal convoluted tubule. तो ये osmolarity, ठीक है, ये पैरेलल चलेगी. आप अपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर देंगे, ठीक है. फिल्ट्रेशन वाला पार्ट खत्म. Now we are dealing with reabsorption and secretion. When we are talking of the reabsorption, mainly right now we are concerned with the proximal convoluted tubule. Why we call it proximal? It is near to the glomerulus. It has turns, convolution, ठीक है, convoluted tubule, tubular in structure. Histological changes, mitochondria increases, holes increases, villi increases. Why so much of histological changes? Because of the nature of function they have to perform. So they need tremendous amount of energy for their reabsorption process. What are the substances which are getting filtered? Except the formed elements and the proteins. Okay, whatever the content of plasma, it is getting filtered. Okay, in case of water, maximum क्या हो रहा है? Water, ठीक है. तो जो भी content है filtrate का, उसकी osmolarity कितनी होती है? Same as the osmolarity of blood. And what is the osmolarity of blood? It is 300 milliosmoles. As we are moving from cortex towards the medulla, okay, so osmolarity changes. Okay, from 300 milliosmoles, the osmolarity increases when we are reaching towards the tip of the medulla to 1200 milliosmoles. So what is the osmolarity in the PCT? It is 300 milliosmoles, and out of the total 100%, 65% of the filtrate or the substances are getting reabsorbed into the PCT via either the peritubular capillaries or vasa recta. Okay, and what are the mechanisms which are responsible for reabsorption? Maybe diffusion, maybe facilitated diffusion, maybe active transport mechanism. In case of active transport mechanism, it might be primary or secondary active transport mechanism. Okay, so the concept should be clear regarding the primary active transport mechanism and secondary active transport mechanism. Clear? These are the paracellular pathway in between the two cells, okay, and this is the transcellular pathway, movement of water through osmosis, okay, and some of the substances are moving with the help of secondary or primary active transport mechanism. How much time is this? 16 minutes, no? So, क्या हुआ? नींद कैसे आ रही है? नहीं आ रही? अच्छी बात. क्या हुआ? किसका फोन आ रहा है? नहीं? What is the renal? What do you know about aquaporins? Water channel. Okay. Now you get a short note on aquaporins. ठीक है. और aquaporins का जो channels का short note आता है, वो specific आता है किस particular segment के अंदर जाके, when we are talking of the collecting tubules and collecting duct. But they are mainly involved in water reabsorption. चलो इसको नेक्स्ट में करेंगे. इसमें ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, ग्लूकोज, ठीक है, और बाकी सब्सटेंसेस की एब्जॉर्प्शन होगा. पर उससे पहले जस्ट गो थ्रू द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. आप उसको पढ़ के आइए. एक्टिव, पैसिव, ठीक है, और प्राइमरी और सेकेंडरी, चार ही चीजें कह रहे हैं, ठीक है. एक्टिव, पैसिव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी.